Assalamu alaikum and welcome to Just Law on Iqra TV. I'm your host Ilyas Burbulia and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law we normally discuss an area of law which is of interest to you, our viewers. Secondly, more importantly, Just Law is a live show. So whatever questions that you have on any aspect of English law, please feel free to pick up the phone and give me a ring on the number that appears at the bottom of your screen. Just a couple of minor points before we get going. Obviously, it's a live show. If your matter is quite complex and I need to speak to you in detail, then I'll ask you to leave your number with the control room and I will have that more in-depth conversation off air. And obviously, secondly, if there are documents that I need to see before I can advise you in greater detail, then off air I'll make arrangements for you to send me the documents and I will then have a look at the documents and have a more thorough discussion with you off air. But in my experience, the vast majority of questions that we get live on air, whether it's to do with immigration matters or any other matters, I should be able to answer those questions live on air. So whatever questions that you have, please feel free to ring on the number that appears at the bottom of the screen. Now, as always, and as I said at the outset, we normally have an area of law which we discuss. And today, what I want to look at in depth is how a successful spouse application can be made. But just before I do that, and also connected to the topic for today, which is how to make a successful spouse application, just want to touch upon the recent changes made by the Home Office in light of the current lockdown and the COVID-19 pandemic that we are experiencing. Now, over the last few months, from the end of March, so April, May, and most of June, the Home Office has been making minor amendments bit by bit. So that's been very helpful. And as I mentioned on the show last week, the Home Office just about as we were going to go live on air, just about a day before or so, the Home Office made some announcement to spouse applications, made some announcements to further leave to remain applications where somebody's here on a spouse visa or where somebody is applied for indefinite leave to remain. In particular, the amendments were to the financial requirement, the minimum income requirement. So where, as our viewers will be aware, at different stages of the application process, whether it's at the initial stage where an application is being made for somebody to come to the UK, whether it's at the extension stage, whether it's at the indefinite stage, there is a minimum income requirement. Normally, it's a question of the sponsor, sometimes the applicant, submitting income documents such as wage slips, etc., demonstrating what the income is. And what the Home Office has done recently is to make that slightly easier. Easier in the sense that the Home Office acknowledges that because of the current lockdown situation, a lot of people being furloughed, etc., people are not earning enough money and they may be furloughed, in which case they're earning 80%, then their income might have dropped after March. So what the Home Office has done is to say, look, okay, we will make some concessions, we will introduce some flexibility. So that has come into force. Now, if you are applying for a spouse visa, or you're applying for an extension, or you're applying for indefinite leave, bear that in mind, that if there is a problem with your income, the minimum income requirement in the traditional sense isn't being met, there is this flexibility that's come in about a week ago. You might be able to take advantage of that. So bear that in mind. And that's relevant to today's topic, which is how to make a successful spouse application. So where the husband, a wife, or fiance is abroad, whether that is India, Pakistan, Bangladesh, wherever it is, and they wish to come to the United Kingdom and join their partner here. How do you go about that? What are the requirements? That's what we want to look at in greater detail. Now, there was a time when
the application process was very straightforward. There were certain rules which had to be satisfied, but the Home Office wasn't prescriptive in terms of the documents which need to be submitted. But recently, the rules which have come in, the way the immigration rules have been amended, the Home Office are very specific in terms of the documents that they want from an applicant. So a lot of the problems that we see when somebody is making a spouse application arises from the fact that these very specific documents that the Home Office is requesting haven't been provided by the applicant. So it is really a question of not just meeting the rules in terms of having enough income, accommodation being available, etc. There are specific requirements in terms of what needs to be submitted to demonstrate that the rules are being met, and that's where the majority of the problems occur when spouse applications are being made. So let's look at a typical scenario where somebody from UK has gone abroad and got married. That might have happened 6 months ago, a year ago, or longer. And now they've reached a stage where the sponsor in the UK wants to sponsor their husband or wife to come to the United Kingdom. How do you go about making that application? What are the rules governing that? Now, broadly speaking, what the Home Office is looking for is evidence that the marriage has taken place. They are looking at whether the income requirement has been met or not. They are looking at whether there is sufficient accommodation for the husband or wife who's coming to the UK to join the UK partner. They are looking at whether this relationship is genuine or not. So broadly speaking, those are the areas that the Home Office are concerned with, from the legality of the marriage to the income requirement to the accommodation requirement to whether the relationship is genuine or not. And when I said at the outset that the Home Office wants you to submit certain specific documents, those documents relate to each of those areas, whether it's to do with the legality of the marriage, whether it's to do with income, whether it's to do with accommodation, whether it's to do with the relationship. Those specific documents that the Home Office is requesting relate to those areas of concern, or areas that the Home Office looks at in a greater detail. Now, there are certain documents which the applicant who is abroad, the partner who is abroad, needs to get together. And one of the key documents is where the application is being made on the basis of marriage. One of the key documents, as you would expect, is the marriage certificate. A marriage certificate which is obtained following a legal marriage which is recognised by the UK Home Office. Now, in the vast majority of cases, this is a fairly straightforward requirement, where somebody goes abroad and gets married according to the rules which apply in that particular home country. It's Pakistan, it would be obtaining a nikah nama. Different rules apply whether the marriage takes place in Pakistan or whether it takes place within Azad Kashmir. But whatever it is, there is a nikah nama, and then there is some kind of, normally a formal document which is issued. If the marriage has taken place in Pakistan, the Union Council now issues a Nadra marriage certificate, got a formal looking document. If the marriage has taken place in Azad Kashmir, the Tehsil Mufti office also issues normally a letter and some form of marriage certificate as well. So in the vast majority of cases, in 95% of cases, that in itself doesn't present a problem. It's a spouse application, the marriage has taken place, and the formal marriage document is all that needs to be submitted. Let me take the first call for today before I look at this in greater detail. Hello, Assalamu alaikum. जैसे मुझे पूछना था, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ जी, ठीक है जी। तो
वो सबको ग्रांट मिली, मुझे ग्रांट नहीं मिले। मैंने जब अपील की ना उन लोगों को, जी तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपकी जो ट्रेडिंग इनकम है ना, हाँ नॉन ट्रेडिंग इनकम है ना, वो ट्रेडिंग इनकम से ज़्यादा होती है, इसलिए आपको नहीं मिलती। जी और समझ गया मैंने जी 2018 के अंदर में, दिसंबर के अंदर में, वो जो मैंने दूसरा जॉब था वो जी छोड़ दिया था। जी दिसंबर 2018 से अभी तक मैं पूरी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। जी तो जी शायद मुझे मिलनी चाहिए उसके लिए, तो क्योंकि मेरे फ्रेंड जो काम कर रहे हैं तो वो 1 साल से जो कर रहे हैं ना, उसको भी मिला पैसा। जी 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 तो मैं तो 1.5 साल से पूरी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो भी जी मुझे नहीं मिला। तो उसके लिए कोई रास्ता है तो मैं आगे कुछ कर सकूँ। जी तो आप जो हो जी जी गवर्नमेंट वाले जो अप्लाई करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की जो ग्रांट है उसके लिए, तो वो देखते हैं 2018 टू 2019 की इनकम। वो रीसेंट देखते नहीं है 2019 से 2020। सो यहाँ फर्स्ट नहीं नहीं, प्रॉब्लम। वो पूरे लास्ट ईयर भी मैंने है ना, पूरे 1 साल में टैक्स भी मैंने पे किया था जी सेल्फ जी एम्प्लॉयड का। सो 2018-19 में वो ये देखते हैं ना कि आप एम्प्लॉई थे या सेल्फ एम्प्लॉयड थे। सो वो देखते हैं कि ज़्यादा क्या किया था आपने, आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा कहाँ से आ रही थी वो टाइम में, वो एम्प्लॉयमेंट से आती थी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आती थी। तो आपकी जो इनकम है, तो इनकम की जो स्प्लिट 2018-19 में वो क्या थी? 18-19 में वो दूसरा मैं काम कर रहा था ना, वो दिसंबर में मैंने छोड़ा था, तो वो जी शायद हाँ उसका भी मेरा 12,000 पाउंड उसमें मैं दिखा रहा था, और हाँ। सो इसमें आपकी मेरा जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो ज़्यादा थी। एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा थी, इसलिए तो मुझे नहीं मिला। यही ये स्कीम में प्रॉब्लम है ना, कि आप जैसे जो लोग हैं जो पहले काम किया था फिर वो छोड़ दिया, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले गए। मगर एंड में जो फाइनेंशियल ईयर है 2018-19, आप अगर एंड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गए तो फिर तो आपकी इनकम इनफ नहीं होती है ना। मेजॉरिटी इनकम आपकी एम्प्लॉयमेंट से होती है। तो आप थोड़ी सी जो ये स्कीम जो लाए हैं अनफेयर है, अनफेयर। तो आपने उससे कुछ कहा कि आप रिव्यू करो। मैं जी मैंने रिव्यू किया था, जी तो रिव्यू किया था, उन लोगों ने लेटर मिला भेजा मेरे ऊपर, तो वही भेजा। उसने उसमें ये लिखा था कि नॉन ट्रेडिंग इनकम आपके ट्रेडिंग इनकम से ज़्यादा है, इसलिए आप क्वालिफाइड नहीं हो सकते। यही प्रॉब्लम है ना। मैंने दूसरे लोगों का भी यही सुना है कि वो एनालाइज करते हैं कि 2018-19 में अपने एम्प्लॉयमेंट से इनकम ज़्यादा थी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकम ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा थी, हम्म, इसलिए। आपने उसको ये भी बताया कि 2019-20 के भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के, आप उसने बताया आपने उसको? नहीं, मैंने बताया तो नहीं था उनको, क्योंकि वो लोग तो पीछे की बात कर रहे थे ना, देखते नहीं इसलिए ना, मैंने। यही प्रॉब्लम है ना, वो 19-20 को देखने के लिए तैयार ही नहीं है ना। क्योंकि अभी अगस्त में भी शायद मिलने वाला है ना, तो अगर, क्योंकि अभी तो मैं टैक्सी कर रहा हूँ, तो पूरी तरह से ये बिजनेस ही क्वाइट है अभी तो। जी तो कोई काम आपने जो नहीं किया एच होगा। एम आर सी से डायरेक्टली फिर ये बात की, आपने ईमेल से बात की या टेलीफोन पे? टेलीफोन के ऊपर बात की थी। और तो आपने वो 1920 की बात की, तो वो ये बात ही नहीं की थी 1920 की नहीं, आपने? बात की नहीं थी मैंने, क्योंकि वो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है, रेडी वो नहीं जो है, यही बोलते हैं। प्रॉब्लम है ना। हाँ, रेडी असल नहीं है, क्योंकि वो इतने बिजी है। अ, फोन हम करते हैं ना, जी 1 घंटे के बाद फोन पिकअप करते हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना वो लोग फोन कट कर देते हैं। जी तो सुनने आपके के पास लिए रेडी नहीं है। एक ही और ऑप्शन है, पता नहीं ये वेदर दिस विल वर्क और नॉट। जो आप जो भी एरिया में रहते हैं उसका जो काउंसिल है, काउंसिल को भी काफ़ी पैसे मिले हैं, फंड्स के लिए मिले हैं। सो जो लोग हैं जिसको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो वो लोग डिस्क्रेशनरी ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये एच एम आर सी से जो पैसे देने के लिए तैयार वो नहीं है, जो मार्च में पैसे मिले थे, जो अगस्त में दोबारा मिलने वाले हैं, अगर वो तैयार नहीं है तो आप ये ट्राई करो। जो काउंसिल में जो जिसको जो पैसे काउंसिल को मिले हैं टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेसेस को या सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को, तो आप इस पे ट्राई करो और इसको एक्सप्लेन करो कि ये मेरा सिचुएशन है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मोस्ट लाइकली वही आपका बेस्ट ऑप्शन है कि अगर ये डिस्क्रेशनरी ग्रांट आपको मिल जाए, अगर आप उसको एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल, काफ़ी जो बिजनेसेस है उसको पैसे मिले जिसके पास प्रेमिसेस की लीज है
जो बिजनेस रेट्स दे रहे हैं, मगर जो मार्केट स्टॉल में जो स्टॉल होल्डर्स है उसके पास तो लीज नहीं होती, उसके पास लाइसेंस होता है, वो बिजनेस रेट्स भी पे नहीं करते, तो उसको पैसे नहीं मिले, तो वो लोग को भी ये जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट है गवर्नमेंट की, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझको तो लगता है कि यही एक ऑप्शन है आपके पास। के पास जाऊँ मुझे फॉर्म कुछ भरना पड़ेगा, कुछ उनको देना पड़ेगा, फॉर्म डाउनलोड करके जाना पड़ेगा जी, मुझे। वो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप वो वेबसाइट को देखो, आपकी जो काउंसिल है, लोकल काउंसिल की वेबसाइट को देखो। इसमें अगर आप चेक करेंगे ना कोविड-19 की जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स है, तो इसमें वो उसकी कोई सिस्टम होगी या कैसे आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वो जनरली ये जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स है काउंसिल की, वो इसलिए ही सेटअप किए हैं कि जिसको गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिले कोई भी वजह से, तो अगर वहाँ से आपको मिल जाए तो पॉसिबल है कि वो वहाँ से बेनिफिट कर सकेंगे। मगर HMRC की जो बात की ना, मुझको लगता नहीं है कि वो आपको पैसे देंगे। वो मुझे नहीं, क्योंकि वो लोग 2 मरतबा मैंने रिव्यू किया ना, 2 मरतबा यही वो लोग बता रहे थे, नॉन ट्रेडिंग। और अभी कोई अमेंडमेंट्स भी नहीं कर सकते, अभी कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो सब सारा फाइल हो गया, सब वैसे ही रहेगा। आई थिंक आपके लिए ओनली ऑप्शन है कि आप कोई और ग्रांट को देखें, और ये काउंसिल की जो ग्रांट है ना, वही एक ऑप्शन है कि वहाँ से अगर मिल जाए तो। लोकल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। जी, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जी। लोकल वेबसाइट के ऊपर। हाँ, लोकल अथॉरिटी की वेबसाइट पे। सो अगर आप ब्रैडफोर्ड में रहते हैं तो ब्रैडफोर्ड की वेबसाइट होगी, अगर आप लीड्स में है तो लीड सिटी काउंसिल की वेबसाइट होगी। ये काउंसिल की फंडिंग है जो स्पेसिफिक उसको दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसको ट्राई तो करता हूँ। नो प्रॉब्लम, आप वो ट्राई करो, हो सकता है कुछ वहाँ से मिल सकेगा। जी थैंक यू जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच आपके कॉल के लिए। सो जस्ट विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई जी। हेलो, उर्दू में बात कर सकती हूँ? जी, सॉरी, आप उर्दू में बात कर सकते हैं जी। ये बस मुझे एडवाइस करना है कि मैं मार्च में गई थी, फरवरी में लड़के की शादी हुई जी। ओके। फिर 1 महीना थोड़ा डिले हो गया सब पेपर्स वर्क करे में। 18 मार्च को उसने पेपर सबमिट किया जी। फिर ये लॉकडाउन हुआ जी। तो मैं वहाँ थी, फिर मुझे यहाँ आना पड़ा बिकॉज आई एम ऑन इंसिडेंट। ओके, तो बच्चों ने मुझे यहाँ बुला लिया जी। तो अभी क्या है कि ये 2 महीना लॉकडाउन हुआ, तो अभी 3 महीना हो गया जी। फिर अभी रिस्पॉन्ड आया लास्ट वीक कि अभी 15 to 60 डेज लगेगा। मेरा लड़का तो उधर ही है, लाहौर के अंदर में मकान उधर किराए के ऊपर लेके वो हस्बैंड वन वाइफ रह रहे हैं। तो अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो अभी उसका क्या वो, लेकिन क्या है कि वो बेनिफिट के ऊपर है, वो डिसेबल है जी। उसकी इनकम है 12,000 समथिंग, 13,000 जी। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा नहीं कि मुझे वो अभी फिक्र हो रही है, क्योंकि अभी वो पता नहीं कब तक अभी वो ठहरेगा वहाँ जी। तो ये जो केस जमा किया ने, वो कहाँ किया था? पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में, मुल्तान की लड़की है जी जी। अभी मेरा लड़का रह रहा है उसमें लाहौर में रह रहा है। कोई बात नहीं, चलो ठीक, ओके। तो ये उसका जो केस वहाँ जमा हो गया था, उसने पासपोर्ट जमा कर दी थी? हाँ, पासपोर्ट सब डॉक्टर, मेरी डॉटर है ना, उसने सब कुछ किया है, वो सब डील कर रही है। नहीं जी ठीक है, मगर वो जो वाइफ है उसकी पाकिस्तान में, उसने वीजा सेंटर में पासपोर्ट जमा कर दिया? हाँ, पासपोर्ट सब भी उसकी फाइल जमा कर दी है, सर्टिफिकेट जी। और जो फिंगरप्रिंट से, फोटोग्राफ से, वो सब ले लिया वहाँ? हाँ, सब कुछ हो गया। ओके, ऑलराइट। और वो कब हुआ था? मार्च में? मार्च के 21 को निकाह हुई जी, राइट। और 23 को हम लाहौर आए जी। फिर 1 महीना उधर ठहरे, फिर सब पेपर वर्क हुआ, सब 18 मार्च को हमने सबमिट किया जी। तो फिर 1 महीने के बाद फिर मुझे तो यहाँ आना पड़ा बिकॉज लॉकडाउन हो रहा था और मैं बहुत बीमार हो गई थी जी। तो लड़का उधर ठहर गया लाहौर के अंदर, अभी 4.25 महीना हो गया वहाँ है। अभी उसकी इनकम को मुझे पूछना है कि वो, उसका घर भी है यहाँ लेस्टर के अंदर, उसका घर है, उसकी डिसेबल बेनिफिट उसको मिलती है, वो 13,100 अ मंथ मिलता है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं
नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसमें जो एप्लीकेशन भी जमा हो गया, उसका प्रोसेस अगर जमा हो गया तो वो होम ऑफिस उसको प्रोसेस भी कर रहे हैं। होम ऑफिस ने क्या कहा है कि जब तक पाकिस्तान में वीज़ा सेंटर वो खोलेंगे नहीं, तब तक वो जवाब नहीं देंगे किसी को भी, ये कहा है। सो हो सकता है कि ये जो आपकी जो डॉटर इन लॉ है उसके केस में उसने डिसीजन बना लिया है, हो सकता है कि डिसीजन बन गया है, मगर होम ऑफिस वाले आपको नहीं बताएंगे जब तक वो जो वीज़ा सेंटर है, जेरी ऑफिस है, जब तक वो ऑफिस ओपन नहीं होती, और अभी तक ऑफिस ओपन नहीं है पाकिस्तान में। और तो पाकिस्तान में नहीं है तो यहाँ तो उसको पाकिस्तान से वो जवाब मिलेगा कि यहाँ इंग्लैंड से उसको जवाब मिलेगा? हाँ, तो वो लड़की तो पाकिस्तान में है ना? हाँ, लड़की पाकिस्तान में है। हाँ, तो जवाब जो पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट जो पिकअप करने के लिए जाना पड़ेगा, जो जवाब देते हैं वो वहाँ ही देते हैं, पाकिस्तान में ही देते हैं। और तो पाकिस्तान में ही उसको जवाब, क्योंकि लास्ट वीक थर्सडे को रिस्पॉन्ड आया था, बोलते थे कि 15 to 60 डेज। हाँ, वो है ना, वो सब 2 months जो लॉकडाउन हुआ ना वो काउंट नहीं करते। जी, तो इसमें वो सबको ही अभी वो ईमेल भेजते हैं कि डिले होगा आपका केस में, आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, आप वेट करो, वो सबको ये ईमेल भेज रहे थे। मगर आपने जो आपकी जो डॉटर ने उसने जो एप्लीकेशन किया वो नॉर्मल किया था या फास्ट ट्रैक वाला किया था? I think it's a fast track one. जी, तो if it's the fast track one, तो normal process, तो most likely the decision has been made, most likely by now. But प्रॉब्लम क्या है कि वो वो उसको बताएंगे नहीं कि डिसीजन बन गया। अब जब तक वो when the visa center opens, जब वो खोलेंगे वीज़ा सेंटर को, तब वो सबको बताएंगे कि आपका डिसीजन बन गया है, आप अभी पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाओ। बट बिकॉज वो वीज़ा सेंटर बंद है, उसने क्या किया, किसी को भी वो डिसीजन नहीं बताएंगे। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जब वो सेंटर खुलेगा तब तक कोई जवाब आएगा। जी, असल में पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या हुआ कि वीज़ा सेंटर की ओपनिंग डेट अभी तक पब्लिश नहीं हुई। सो आप जो VFS की जो वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो इस पे लिखा होता है कि कहाँ सेंटर्स ओपन हो गए। सो चाइना में, फिलीपींस, फार ईस्ट में वहाँ ओपन हो गए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वहाँ अभी तक नहीं हुए हैं ओपन, और कोई डेट भी नहीं है कि कब खुलेंगे। तो मेरा लड़का तो उधर है बेचारा, इंतजार कर रहा है, वो भी थक गया है अभी। बोलता है कि 15-60 डेज में शायद हो जाए, तो जुलाई के एंड तक मैं इंतजार कर सकती हूँ। उसका घर है नहीं यहाँ पे। मुझको क्या लगता है कि जिसने अप्लाई किया, आप थोड़े से लकी थे कि लॉकडाउन से पहले उसके पासपोर्ट जमा हो गई, तो मुझको ये लगता है कि वो डिसीजन मिलेगा प्रोबेबली एंड ऑफ जुलाई, उसको डिसीजन मिलेगा। Yeah, that's what they say, that 15 to 60 days, because ये 2 months लॉकडाउन है, हम काउंट नहीं करते। चलो इंशाल्लाह अल्लाह करे ने ये 6 वीक के अंदर में हो जाए। जी, इंशाल्लाह उसकी वाइफ भी अभी ये बोलती है कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मैं मेरे मॉम के घर नहीं जा सकती, मुझे आपके साथ ही आना है। राइट? जी सही बात है। जी इंशाल्लाह, होपफुली इट विल बी अ गुड रिजल्ट, बट जस्ट वेट एंड सी। So wait and see for another 6 weeks, Inshallah, but I think realistically end of July. End of July. Most likely. Okay, दुआ में याद रखना। जी, आप भी दुआ में इंशाल्लाह हमारा काम हो जाए। इंशाल्लाह दुआ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू है आपका कॉल। विल टेक अ नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम। हेलो, हाँ जी। जी, आप लाइव है ऐप पे। जी, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरे 2-3 सवाल हैं, मैंने पूछना था जी कि मैं फैमिली पर परमानेंट पर आई हूँ जी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया था जी, तो इधर आई हूँ, तो हमारी सेपरेशन हो गई है। ओके, ठीक है। तो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चले, मेरे पास 2 मेरे बच्चे हैं। जी, ठीक है, ओके। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया, बेनिफिट अप्लाई किया, वो मेरे नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि दूसरा कार्ड, ये फैमिली वाला है, दूसरा कार्ड आप अप्लाई करो। फिर मैंने दूसरा कार्ड अप्लाई किया जी, वर्क परमानेंट वाला जी। वो भी मुझे 5 साल का मिला। पहले फैमिली वाला 5 साल का था, अब मेरे पास 5 साल का है। तो अभी भी वो बेनिफिट नहीं लगाए,
हाँ, तो अभी आपको बेनिफिट नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, मैंने 3 दफा अप्लाई किए तो नहीं मिल रही। ओके, आपके पास जो कार्ड है ना, वीजा का कार्ड, हाँ जी। इस पे क्या लिखा है? नो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड्स। वर्क परमिट लिखा हुआ है। हाँ, पब्लिक तो फंड्स मैं काम नहीं करती हूँ, वीकली 26 आवर काम करती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 बच्चे हैं, वो मेरा पूरा नहीं हो रहा। मेरे साथ और कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरा और कोई जानने वाला नहीं है, तो प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो आपने जब बेनिफिट के लिए अप्लाई किया ना, तो क्यों उसने ना कहा आपको? उन्होंने हस्बैंड के डॉक्यूमेंट मांगे, तो वो हमारी सेपरेशन हो गई है, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसके। ओके, तो आप एज अ सिंगल क्लेमेंट क्यों नहीं डाले आपने केस? सिंगल एज अ सिंगल पर्सन जी, आपने सेपरेट? नहीं, वो नहीं अभी डाला, तो अभी कुछ नहीं उसके बाद किया कि डिवोर्स का भी करना है, तो वो क्या करना चाहिए मुझे? अभी बेनिफिट भी नहीं है, सेपरेशन हुई, डिवोर्स हाँ, हुई। तो आपको अभी एज अ सिंगल पर्सन केस वो डालना चाहिए ना, अच्छा, एज अ सिंगल क्लेमेंट। तो इसमें फिर हस्बैंड के साथ जॉइंट क्लेम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप तो सेपरेट हो गए हैं। हाँ जी, मैं सेपरेट हो गया। आपके कार्ड पे तो कोई ऐसा नहीं लिखा है ना, नो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड्स के, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है। ओके, तो अगर नो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड्स नहीं लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि आप क्लेम कर सकते हैं, मगर आपका क्लेम एज अ सिंगल पर्सन होना चाहिए। ओके, ये सिंगल वाला करूँ अब? 100% सिंगल वाला होना चाहिए। तो इसके बाद बेनिफिट होंगे? तो इसके बाद वो बेनिफिट मिल सकती है ना, अगर आपकी इनकम इनफ नहीं है या तो आपका काम छूट जाए। इनकम का मैं ना, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर सकती, मेरे साथ 2 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से अफोर्ड करती हूँ जी, मैं। तो आपके जो हाउसिंग कॉस्ट है, आप रेंट ऐसा कुछ पे कर रहे हैं? हाँ जी। आप यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए अप्लाई करो ना एज अ सिंगल क्लेमेंट। आप तो जी, हाँ आप जी, उसके बाद फिर वीजे का मेरा भी क्या होगा? मतलब ये 5 साल का खत्म होगा, फिर इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, क्या होगा? जी, आपका जो हस्बैंड था वो ब्रिटिश था? मेरा हस्बैंड जो है वो स्पेनिश था। स्पेनिश था जी। तो हाँ आपका जी। क्या होगा कि आपका जो आप कब यूके आए थे? मुझे 2 साल हो गए हैं इधर यूके में आए हुए। ओके, तो 1 आपको साल हो गया सेपरेशन हुए को भी। ओके, आपकी शादी का कितने साल हो गए? शादी को तो मुझे 13 साल हो गए हैं ना। ओके, तो क्या होगा कि आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकेंगे जब यूके में आपके 5 साल हो जाएंगे। अच्छा, यूके के 5 साल पूरे होंगे फिर? हाँ, तो आपको परमानेंट देंगे वो। ओके। सो आपको अभी जो है, अभी आपके 2 इयर्स हुए यहाँ, 3 हाँ जी। और साल आपको गुजारने हैं, उसके बाद आपको परमानेंट दे देंगे यहाँ 5 साल, टोटल 5 इयर्स के बाद। ओके। सो वो तो उसका रेजिडेंस रिक्वायरमेंट है ना, ये 5 इयर्स हाँ। कंप्लीट करने पड़ते हैं, तब परमानेंट ओके, देते हैं। बेनिफिट्स का जो इशू है ना, तो सही है। आप एज अ सिंगल क्लेमेंट केस डालो। ओके, तो आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं कि मैं आपके पास अगर आऊँ तो मुझे हेल्प की भी ज़रूरत है जी, आप ऐसे करो कि आपका नंबर आप अगर छोड़ दें कंट्रोल रूम के साथ, तो मैं शो के बाद या टुमारो मॉर्निंग में आपको फ़ोन करूँगा, आप आपका नंबर छोड़ दे तो कंट्रोल रूम के साथ, ठीक है? ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ, तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, क्योंकि मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है, मेरा और कोई जानने वाला यहाँ नहीं है। वो ठीक है, आप आपका नंबर छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या क्या करना है। मगर आपका वैसे तो सिचुएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 5 इयर्स रेजिडेंस के बाद आपका इंडेफिनिट हो जाएगा। विल टेक अ नेक्स्ट कॉल नाउ इंशाल्लाह। जी ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Hello, Assalamualaikum. जी वालेकुम सलाम। I have just questions regarding the lady was asking before about the universal credit. Okay. My question is this, me and my husband got a 2.5-year visa with no public funds. Okay. And can we get universal credit? Right. So on what basis did you and your husband get the visa? Were you both overstayers in the UK? Yeah, because my daughter was 10 years. That's right, I understand that. Okay, what you need to do now, you need to apply to the Home Office for the no recourse to public funds condition to be removed. Okay. At the moment, they are removing that condition at the moment. Because of coronavirus, COVID-19, a lot of people have lost jobs. They are removing that condition. So you can apply yourself. If you Google UKVI removal, no recourse to public funds, there is an online application form that will come up.
You submit the online application, you get a decision within a month. At the moment, they are removing, for most people who apply, the no recourse to public funds condition. Once that is removed, they'll give you a new card. Once that is removed, you become eligible for benefits at that stage. Okay. Because the problem is that when I call to the Universal Credit, they put me pass, and then they give me one payment. And then after, when I say them, because on that time when I was giving all the details and everything, they said that we check from home office, and after their permission, we give you money. So what should I do? You need to remove the condition. It's the no recourse to public funds has to be removed before you become eligible for benefits. Because I'm asking 2-3 times them, and I send a message and everything. No, you're going to get stuck. Everything. Right. You need to make that online application now. Now, I don't know what your circumstances is. A lot of the applications we've done is where people have lost their jobs. There's no income coming in. So in my experience, those people with children have had the no recourse to public funds condition removed. But the thing is, the key, the time to do it is now. And if they are giving money, so it means we should refuse the money. You're entitled. There's no problem. You're entitled to it. There's nothing wrong with that. If the no recourse to public funds condition is removed, you're eligible to apply for universal credit. It has no... But first we have to remove, and then we should apply there. Yes. But if we apply there and they are giving to us, and we are telling everything to them that these conditions are with us, and they say there's no problem, we ask to the home office, so we shouldn't listen to these things. If the universal credit application results in money being given to you, they know about the no recourse to public funds, and they are still prepared to give you money, that's fine. Yeah, because they know everything. Then there is written on the card, there's no public fund and everything. Yeah, and they are giving money. I think what's happened is, because of what was going on in the last few months, a lot of people losing jobs, etc. I think the approach of the DWP was to say, where people are out of work, with families, we will allow them to claim benefits. But the proper way of doing it is actually to get the condition removed. Okay. Then they have to give you the money. They don't. And which side you told me? So even it's on the Home Office website. So if you put into Google, remove no recourse to public funds, that will take you to the right page on the Home Office website. It's an online form. It's a bit of a headache filling it in, but you've got to do it. You have no choice. You should do it for yourself, your husband as well. It'll ask you about... If I'm getting before without removal of this one, then for the next extension, we can get problem. You think so? No. Did you say permanent? Sorry, did you say? Sorry? Means for the next extension, when we go to the Home Office, will they give problem if we don't do this application for the removal of no cost for the card? It has no impact on the extension application. You're on the 10-year route to settlement. So you're on the 10-year route to settlement. For somebody who's on the 10-year route, it doesn't matter if you get these benefits. You stay on the 10-year route. It's a problem for somebody who is on the 5-year route to settlement because they move them on to 10 years. But you will be on the 10-year route to settlement based on what you've said. And then if Universal Credit is giving money, so it means they are giving right money. Sorry, if Universal Credit are giving it means what, sorry? If Universal Credit pass me to give money, so you said that it is through, they ask first to the Home Office and then they pass me. Yeah, so that's fine. They made their inquiries, and despite making inquiries, they're prepared to pay you, which is fine. But go back to what I said, you should get the no recourse to public. Safe side. That's the proper way to do it. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Thank you very much for your call. Thank you. We'll take our next call. Hello, assalamu alaikum.
जी वालेकुम अस्सलाम जी भाई, thank you for calling जी. I'm waiting, yeah? Yeah, sorry, you're live on air. Yeah, I'm live. Okay, so fire away. Please ask your question. Okay. Yeah, brother, you're live on air, so you can ask your all question. right, okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam. Can I speak in Urdu, please? जी उर्दू ठीक है जी. अच्छा, actually मेरे सिर्फ I will take just couple of minutes. वो ये है कि मैंने अपनी वालदा का विजिट वीजा अप्लाई किया था 7 years before. Okay. और वो थोड़ी बुजुर्ग हैं, तो इसलिए मैंने अपने भाई का साथ स्पॉन्सर भेजा था, दोनों का ही ना. जी ठीक. तो भाई के फॉर्म फिलिंग में थोड़ी सी क्लरिकल मिस्टेक किया हो गया कि वो जो जहाँ 12 लाख लिखना था वहाँ पे 12 करोड़ लिख दिया गया. जी ठीक है. ओके. तो उन्होंने कहा जी कि टैक्स डॉक्यूमेंट आपके बने हैं 12 लाख के और फिगर जो है 12 करोड़ की है, तो योर ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट ब्ला ब्ला ब्ला. वो इसलिए उन्होंने डिसेप्शन पे लगा के तो फेक डॉक्यूमेंट्स कह के तो उसको 320 लगा दिया. ओके. ओके. लेकिन वालदा के डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं था, क्योंकि वो तो बुजुर्ग हैं, वो तो काम नहीं कर रहे. सही बात है जी. लेकिन उनका भी 320 लग गया था. Okay. लेकिन 7 साल गुजर गए हैं. कैन आई स्पॉन्सर माय मदर अगेन, क्योंकि 7 साल तो गुजर चुके हैं. सर प्रॉब्लम क्या है कि स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि द 320 बैन शुडंट अप्लाई, तब भी वो रिफ्यूज कर सकते हैं ना ऑन अ विजिट वीजा. डिसेप्शन अभी भी गुंजाइश है वहाँ पे, वो कर देंगे. प्रॉब्लम क्या है कि वो 320 अगर उसने निकाल भी दिया ना, आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, उसने कहा कि ठीक है 320 डिसेप्शन एलिगेशन नहीं होना चाहिए यहाँ, हम सिर्फ उसको नॉर्मल विजिटर एप्लीकेशन जैसे हम उसको कंसिडर करेंगे, मगर फिर वो रूट में भी रिफ्यूज कर देंगे. फिर भी कर देंगे. वो ये कहेंगे कि वी आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन शी इज ओवर 70 नाउ. और ये मगर प्रॉब्लम है ना कि वो कहेंगे कि वी एक्सेप्ट कि डिसेप्शन नहीं है, बट देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी, वी आर स्टिल नॉट हैप्पी, हम सेटिस्फाइड नहीं है कि वो मदर वापस जाएंगे और वो रिफ्यूज़ कर देंगे. सो 320 को निकालने से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा. तो 10 साल फिर वेट कर लें इस चीज़ का. तो इससे ये वेट कर लो, मगर इसके बाद भी वो कह सकते हैं कि वी स्टिल नॉट प्रिपेयर टू ग्रांट यू वीज़ा. ये प्रॉब्लम है विजिट वीज़as में अभी. सो मैं क्या करता हूँ अभी शॉर्टली है ना, हम ब्रेक लेने वाले हैं. स्ट्रेट आफ्टर द ब्रेक अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये 320 का सिग्निफिकेंस अगर निकालने से कहाँ आपको फ़ायदा होता है. मगर विजिट वीज़ास में प्रॉब्लम क्या है कि अगर 320 निकाल भी दिया ना, तब भी वो एज अ नॉर्मल एप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं. सो इंशाल्लाह आफ्टर द ब्रेक आई विल एक्सप्लेन टू यू. सो 320 को निकालने से प्रॉब्लम है कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. डिफरेंट वीज़ास में 320 निकालने से वीज़ा मिल जाती है. हम अभी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं. सो स्ट्रेट अवे आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम द ब्रेक आई विल एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिमूविंग द 320 डिसेप्शन एलिगेशन. विल बी बैक इन द नेक्स्ट couple of minutes.